I start in the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum, student. Today we have the topic in continuation of articles, definite articles, in which I have covered four basic rules in which initially I just started from those things which are unique in nature. We put definite article there to them. Later on, we proceed to the second, third, and fourth, in which some government organizations, buildings, ships, aeroplanes, and historical events and ordinal numbers we discussed in previous class. Today we have another very important thing to discuss with what we call when if we are told that we will not put definite article to them, and even we can say that some exceptional or some, in order to particularize the things, we put article there. Sometimes we say we can overrule the rules of a definite article, that is the rule of 5. In that rule, what is written, when we wish to particularize a noun, person or object, some common noun in which we are putting a or n because of singular, or uncountable noun like beauty, like water. Sometime we are told that we will not put a definite article or indefinite article to in that places, but somehow we have to overrule such of that one because of to particularize that one. Suppose if I say dinner, meals time, I mean, if we say that we will not put a definite article there, if I say the dinner you served yesterday was lavish, so the dinner was there as to be particularized that. So here is the same thing. When we wish to particularize a noun, person or object, we call them as to particularize. See here, this is the watch. This is countable, can be a watch. This is the watch. This is a watch बतिंदो, पर a watch जो मतलब है any watch, can be any watch on any wrist, but this is the watch जेका मुखे ऐं जेके ॿुधायां थो पियो उन्हनि ॿिन्ही खे properly ख़बर हुजे त उहा कहिड़ी watch आहे. This is the watch that my sister gave me for my birthday. हाणे इन जो मतिलबु आहे त हिन वाच खे पर्टिकुलराइज़ कयो वियो आहे. उहा माना that or not can be any watch, but particular watch, that is called the watch. I do not like या I don't like coffee. हाणे जुमलो हिते पूरो थी वियो. The coffee, हाणे हिते ॾिसो, ही आहे कॉफी, इहो नॉन काउंट या अनकाउंटेबल नाउन आहे, आर्टिकल बि न आहे. पर हाणे जुमलो छा आहे, द कॉफी that I was served was nice. छा थो ॿुधायो वञे, जेका कॉफी मूंखे माना ॾिनी वई हुई उनखे पर्टिकुलराइज़ कयो आहे, इन जे लाइ उन में छा था इस्तेमालु कयूं पिया, द कॉफी. माना आहे बि छा नॉन काउंट, पर उन खां पोइ बि असां उन में द जो इस्तेमालु कयूं था पिया. सी द लेडी यू सा एट द शॉप. द लेडी, हे अ लेडी हूंदो आहे आम, पर हीअ पर्टिकुलराइज़ आहे. द लेडी यू सा एट द शॉप इज माय वाइफ, राइट. इनखे पर्टिकुलराइज़ कयो वियो आहे. This is the boy who got first position. This is the boy. माना द जो हिकिड़ो ॿियो इस्तेमालु बि कहिड़ो थो थिए पियो उनखे कॾहिं कॾहिं डेमोन्स्ट्रेटिव में. दिस इज द बॉय, ही उहो ई माना दिस दैट दीज दोज वारो बि कॉन्सेप्ट द जो ईंदो आहे. दिस इज द बॉय हू गॉट फर्स्ट पोजीशन. द गर्ल माना हीअ उहा ई छोकिरी आहे. द गर्ल माना हिनखे पर्टिकुलराइज़ कयो वियो आहे, माना दिस ऐं दैट जी माना बि हिन में अचे थी पई. The girl who spoke in meeting is my sister. Can you name the bird जेको
मां ॿुधायां थो पियो, ॿियो ॾिसे थो पियो, ॿियो ॿुधे थो पियो, उनखे था चऊं द बर्ड that are sitting on the branch of tree. ॿियो आहे let's go to the hotel to sip tea to have a cuppa. sip tea हाणे हिते ॾिसो let's go to the hotel. हाणे होटल में छा हूंदो आहे? अ होटल काथे काथे वरी एन होटल जो बि इस्तेमालु आहे, पर हिते द इस्तेमालु थियल आहे, माना हिन जो मतिलबु आहे त इहा उहा होटल आहे जिते असां वेंदा रहंदा आहियूं, उहा पर्टिकुलर आहे। पर हाणे कोरोना में माण्हू खे होटल ते बि न वञणु घुरिजे। टू सिप टी आर टू हैव कपा। कपा छा आहे? कपा वरी जेके इनफॉर्मल वर्ड तौर ते चई सघूं था, इहो आहे कप ऑफ टी। पर हिकिड़ा वरी ॿिया वर्ड हूंदा अथव, लाइक वी से जीअं हूंदो आहे हिकिड़ो होटल, पर हिन में कॾहिं कॾहिं हिकिड़ा वर्ड ॿिया बि हूंदा आहिनि जिन खे चयो वेंदो आहे मोटेल। हाणे मोटेल छा आहे? इट इज़ ब्लेंड वर्ड। ब्लेंड वर्ड इंग्लिश में हूंदा आहिनि, माना ईअं लिखियलु आहे त इहो होटल इहो मोटेल प्लस होटल, माना अहिड़ी होटल जंहिंमें छा चइजे त पार्किंग मोटरिस्ट वग़ैरह जे लाइ का पार्किंग जी जॻह हुजे, उनखे बि चई सघूं था ईअं मोटेल बि हूंदी आहे। ऐं अहिड़े तरीक़े जा काफ़ी ॿिया वर्ड आहिनि, जीअं ब्रंच हूंदो आहे त अहिड़ी मानीअ जो टाइम जेको ब्रेकफास्ट ऐं लंच जे विच वारो हुजे त उनखे न लंच चई सघंदासीं, न असां ब्रंच चई सघंदासीं, पोइ उनखे असां लंच न पर उनखे ब्रंच असां चई सघूं था। अहिड़ा ब्लेंड वर्ड बि हूंदा आहिनि। सो दिस इज़ द रूल। छा आहे हिन जो मतिलबु? उनजो मतिलबु आहे त इनखे असां पर्टिकुलराइज़ माना असां कंदासीं। मोटेल or brunch or other words, but during this lecture my daughter, she is in front of me, objected on that question, on that explanation. She said that motel can be a place where travelers can be resided. I said okay, because when you are going on traveling, on a way there is a sunset, you need to be accommodated in any place, so in that way you will find motel, no doubt, motel where you can park and have the facility of accommodation. Agreed on that one. Next topic, not topic but the rule of that definite article. Before a noun that has become definite as a result of being mentioned second time, paragraphs. When you have small paragraphs, I mean you have the paragraph on a boy, on a chair, on a table, on a co-education, on competent student, on education, whatsoever. When a noun, कहिड़ो noun जंहिंमें असां indefinite article इस्तेमाल कंदा आहियूं, a ऐं n, तो that has become definite, उहो definite थी सघे थो पियो। हे बि पढ़ियोसीं त हे बि थी सघे थो पियो, पर छा उनखे पर्टिकुलराइज़ कयो वेंदो। हे वरी छा थो चए पियो त उनमें उनखे असां कॉमन नाउन खे बि असां डेफिनेट माना स्पेशल करे सघूं था, जॾहिं जुमिला हिकु जुमिले खां पोइ ॿियो जुमिलो वरी इस्तेमालु थिए, उनमें असां इस्तेमालु करे सघूं था पिया। माना छा चए, when being mentioned second time, ॿियो दफ़ो जुमिले, माना जुमिला 2 ईंदा, 3 ईंदा, 8 ईंदा, 10 ईंदा, उनजो पहिरियों दफ़ो डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल वांगुरु इस्तेमालु थींदो, पर ॿियो दफ़ो जॾहिं इस्तेमालु थींदो त उनखे असां द में इस्तेमालु कंदासीं। इन जो मतिलबु छा थियो? Yes, we have already discussed this word as in indefinite common, and now that is repeated one, that's why we put definite article. See, I saw a car, any car. हाणे ईअं न आहे त माना इनखे द कार था कयूं त पर्टिकुलराइज़ कयो वियो अथव, पर रिपीट कयो वियो आहे। आई सा अ कार, हाणे हे हिते वरी साॻियो ई जुमिलो पूरो थियो, ॿियो जुमिलो थो इस्तेमालु थिए पियो। द कार वॉज इंस्टॉल्ड ऑन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम ते हुनखे कयो वियो आहे, माना उन कार जो साॻी कार खे रिपीट कयो वियो आहे। ॿियो जुमिलो ॾिसो वरी, अहमद इज़ अ 9 years old, Ahmed is a 9 years old son, full stop। ॿियो जुमिलो शुरू थींदो, छो त पैराग्राफ में छा हूंदो आहे,
Words consist of words denotes together, they have the sense is called sentence, but combination of sentence is called paragraphs. हिन में भी ईअं ई आहे. Ahmed is a 9 years old. ज़रूरी न आहे तव्हां हाणे अहमद इस्तेमालु कयो. The boy माना उहो ई साॻियो ई आहे उन जे मुताबिक़. The boy wants to be an astronomer. ठीकु आहे, 9 years जो आहे, चए थो त मां एस्ट्रोनॉट थियण थो चाहियां, एस्ट्रोनॉमर थियण थो चाहियां पियो. माना छा, अहमद खे असां वरी द बॉय में मटाए छॾियो आहे. जीअं हेठि बि हिकिड़ो आहे, ही डाइड ऑन अ रोड. ॾिसजो हे जुमिलो, ही डाइड ऑन अ रोड. हाणे हे थी वियो रोड आम आहे, पर हिनखे इन जॻह ते फुल स्टॉप करे वरी असां हिते लिखियो आहे द रोड. हेॾे आहे अ रोड, हेॾे आहे द रोड. माना इहो साॻियो ई आहे, पर रिपीट थो थिए पियो. द रोड इज स्टिल ब्लॉक्ड. टियों जुमिलो ॾिसजो, अ बेगर केम टू अस. हाणे साॻियो ई जुमिलो इस्तेमालु आहे जीअं हे थियल हो अहमद जॻह ते. हिन बेगर जी जॻह ते माना मट बि वर्ड थी सघे थो, रिप्लेस बि करे सघिजे थो, पर सेंस उन बेगर जो ई हुजे. A beggar came to us. The poor man had a smartphone or iPhone. असां वटि एंड्रॉइड फोन कान्हे, बेगर्स वटि आईफोन आहिनि. Fifth sentence, a man went to a forest. In the forest, साॻियो ई फॉरेस्ट आहे. In the forest छो इस्तेमालु कयो आहे, रिपीट कयो वियो आहे. In the forest lived a lioness. हाणे वरी टियों जुमिलो हिन में ॾिनो वियो आहे त हिन लायनेस जे लाइ वरी हिते लिखियलु आहे द लायनेस हैज 3 cubs. Cubs means babies. हिते ॾिसो, I bought a dozen of apples and some mangoes. हाणे हिते ॾिसो, असां हीअं बि करे सघूं था पिया, एप्पल. हाणे हिते लिखियलु आहे द एप्पल्स वर पल्पी. पल्पी माना जंहिंमें मांस हुजे, सुठा हुजनि. एंड ऑरेंजिस वर रॉटन. रॉटन माना जेके ख़राब हुजनि. असां हिननि खे एप्पल ऐं ऑरेंजिस खे गॾे करे द फ्रूट बि लिखी सघूं था पिया असां. माना इहो बि थी सघे थो पियो. आख़िरी जुमिलो लिखो, देयर इज़ अ पोज़ीशन अवेलेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. हाणे पोज़ीशन छा आहे? पोज़ीशन माना वेकेंसीज फॉर द कैंडिडेट्स. देयर इज़ अ पोज़ीशन अवेलेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. द जॉब, हाणे इहो साॻियो ई आहे. ॾिसो हे ऐं वरी ही जेको आहे हिते आहे अ पोज़ीशन, हिते आहे द जॉब. द जॉब्स विल इन्वॉल्व सम इंटरनेशनल लेवल. हाणे इहा बि ख़बर आहे त जेकॾहिं हिते सिंगुलर या प्लूरल हूंदो त होॾे बि माना असां द में मटाए सघूं था पिया. कॉन्सेप्ट कोई बि न आहे. त हिते जेकॾहिं हुजे देयर आर पोज़ीशंस अवेलेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हिते वरी थी सघे थो द जॉब्स विल बी इन्वॉल्व सम इंटरनेशनल लेवल. सो तक़रीबन ही थोरो उन्हनि में डिस्पैरिटी आहे, पर ॻाल्हि कहिड़ी पिया कयूं त हे जेके आहिनि हिननि खे कहिड़ो बि हुजे हुनखे पर्टिकुलराइज़ कयो वेंदो आहे. ऐं उहे रूल बि हिन में अची सघनि था जेके असां वटि लिखियलु आहे त हिननि में द जो इस्तेमालु न थींदो आहे, हुनजो ओमिशन कबो आहे. उन्हनि खे बि असां हिन में इस्तेमालु करे सघूं था. माना ही हर रूल खे ओवर रूल बि कंदो आहे. हिन में वरी छा आहे त जॾहिं असां 2 जुमिला 3 जुमिला पैराग्राफ ठाहियूं, उन में जेको पहिरियों जुमिलो कॉमन नाउन जो लिखियलु आहे को बि, जेकॾहिं असां उनखे रिपीट कंदासीं ॿिए जुमिले में, त उन में असां द जो इस्तेमालु करे सघूं था पिया. अचो नेक्स्ट ते. नाउ रूल नंबर 7. In that rule number 7, read the statement first. Before noun in a singular number when it stands represent for a class. When I was discussing in subject verb agreement, some student asked a question regarding this, that when we put the and then noun, whether it takes singular or plural. I would say when we put adjective without noun and putting definite article the will carry plural verb. But here these all are small singular nouns. We put them the definite article. It will represent the whole class. And that the whole class, when we put definite article the, it means that would be agree to singular verb here.
The heart pumps blood. It means all hearts pump blood. Same thing. all इस्तेमाल कयो, जमा कयो इनखे, पर जेकॾहिं असां उनखे सिंगुलर में वठूं था, उन्हनि सभिनी जूं क्वालिटीज़ साॻियूं हुजनि, सभिनी जूं क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, पिक्युलरिटीज़ सेम हुजनि, त उनखे असां द अॻियां इस्तेमालु करे ऐं उनखां पोइ असां सिंगुलर वर्ब इस्तेमालु कंदासीं. इट वुड बी representative the whole class. Like the kangaroo is found only in Australia. इहो हिकिड़ो वाहिद एनिमल आहे जेको ऑस्ट्रेलिया में फाउंड कयो वेंदो आहे. माना हुन जूं जेके 100% क्वालिटीज़ आहिनि उहे सेम आहिनि. इन जे करे असां हिनखे हिन में बि रखी सघूं था. The bus is the cheapest means of transport. It is generally understood. The bus में किरायो घटि लॻंदो आहे. cheapest आहे हिन जे करे असां द बस इस्तेमालु कईसीं. द मैंगो कहिड़ी क्वालिटी आहे मैंगो जी? द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स, दैट्स व्हाई वी पुट द एंड देयर इज ओवर हियर. द कैमल इज द बीस्ट ऑफ बर्डन. कॾहिं कॾहिं वरी असां हिनखे हीअं बि चवंदा आहियूं द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट. हाणे हिते हिकिड़ी ॿी पॉइंट बि अथव, हिते बि द इस्तेमालु थियल आहिनि. हिकिड़ो असां रूल पढ़ंदासीं, द चीपेस्ट लिखियल आहे, माना एडजेक्टिव जा रूल असां पढ़ंदासीं. हाणे काफ़ी रूल्स आहिनि हिननि जा बि पढ़ंदासीं. सुपरलेटिव डिग्री में बि असांजो द लॻंदो आहे. जॾहिं नाउन ऑफ नाउन हुजे त उते बि लॻंदो आहे. नाउन ऑफ नाउन में बि द लॻंदो आहे. हे सुपरलेटिव आहे ऐं हे बि सुपरलेटिव आहे. इन्हनि में बि द इस्तेमालु थिए थो पियो. द कैमल इज़ द बीस्ट ऑफ बर्डन या द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट. द रोज इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स. या कॾहिं कॾहिं असांखे हीअं बि मिले थो पियो जीअं रेनिन मार्टिन में लिखियल आहे, द रोज स्मेल्स स्वीट. द केट इज डोमेस्टिक पेट. द वेल इज द काइंड ऑफ मैमल. द काउ इज अ यूजफुल या द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल. द काउ इज, हे बि ॾिसो रिप्रेजेंटेटिव द होल क्लास किथे, माना उनखे उन एरिया जे मुताबिक़ ज़रूरु चइजे. द काउ इज रिवर्ड, माना is given respect, is given honor. Revered is a holy, sacred animal for Hindus in India. It happens in this way. So this, the singular noun is representative the whole class in this regards. But there is one, I would say, there is an exceptional, हिकिड़ो हुन में exceptional आहे त इहो माण्हुनि सां या जेका आहिनि औरतुनि सां, माना इन्हनि सां जेकॾहिं रिप्रेजेंटेटिव द होल क्लास हुजे. इन जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल असां वटि आहे कहिड़ो, हीअ आहे मैन इज़ मॉर्टल. रिप्रेजेंटेटिव माना 100% माण्हूअ जी क्वालिटी आहे त उहो छा हूंदो आहे, उहो मॉर्टल हूंदो आहे. हिते जेकॾहिं तव्हां द मैन रखंदो त इहो ग़लति थींदो, हिन जे मुताबिक़ इहो ग़लति थी वेंदो. हालांकि रुगो इहो एक्सेप्शनल केस आहे हुनजो, रिप्रेजेंटेटिव द होल क्लास. शेक्सपियर जो हिकिड़ो जुमिलो आहे, Frailty, thy name is woman. True आहे, man is only animal that uses fire. That छो इस्तेमालु थियल आहे? ठीकु आहे, माण्हूअ जे लाइ इहो न करे जो हिते ओनली इस्तेमालु थियल आहे. हिकिड़ो एक्सरसाइज़ आहे, हिकिड़ी अॻिते हली कंदासीं. Women is the man's mate. Women has great ability. इहे एक्सेप्शनल केसिस आहिनि. हिकिड़ो असां वटि पोयम कहिड़ो आहे, दी 7 एजिस ऑफ, हाणे अ मैन कोन्हे, द मैन कोन्हे हुते. हिन जो मेन जो मतिलबु छा आहे, इहो रिप्रेजेंटेटिव द होल क्लास आहे. जीअं आहे मैन इज़ मॉर्टल, इन जो मतिलबु आहे ह्यूमन बीइंग. त अहिड़े क़िस्म जी पॉइंट बि आहे. अचो नेक्स्ट ते. नेक्स्ट असांजो वरी इहो आहे, व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज़ यूज्ड एज अ कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन असां वटि ॿिनि क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि. या हूंदा आहिनि नेम्स ऑफ पीपल, या हूंदा आहिनि नेम्स ऑफ प्लेसिस. तव्हांखे ॿिए ॿुधायो आहे मां त शहरनि जा नाला हुजनि, मुल्कनि जा नाला हुजनि, कॉन्टिनेंट जा नाला हुजनि, प्रोविंसिस जा नाला हुजनि, डिस्ट्रिक्ट जा नाला हुजनि, डिवीजन जा नाला हुजनि, टाउन्स जा नाला हुजनि, इन्हनि सभिनी में आर्टिकल द न पवंदो आहे. असांजा ऐं तव्हांजा जेके नाला आहिनि इन्हनि सां बि आर्टिकल न लॻंदो आहे. हाणे डेफिनेशन पढ़ो. व्हेन अ प्रॉपर नाउन कहिड़ा, नेम ऑफ पीपल, नेम ऑफ प्लेसिस, यूज्ड एज अ कॉमन नेम. जॾहिं उन्हनि खे असां कॉमन नेम में वठंदासीं त उन्हनि में बि, उन्हनि खे कंपेयर कबो आहे त असां उन्हनि में बि द जो इस्तेमालु करे सघूं था. फॉर एग्ज़ाम्पल,
गांधी, ख़बर आहे गांधी जो पूरो नालो छा आहे? महात्मा करमचंद हरिचंद गांधी। अजीब नालो आहे। गांधी इज़ दी जीसस ऑफ इंडिया। या वरी चवंदा आहिनि, हाणे हे हिते ॾिसो, हे नालो आहे हज़रत ईसा जो नालो आहे, जेसस क्राइस्ट, पर हुन में बि असां द था हणूं पिया। अचो, हा, नाले जी जॻह ते टाइटल हुजे, जीअं आहे हिते लिखियल आहे कायदे आज़म लिखियल हुजे, कायदे आज़म जो नालो आहे मोहम्मद अली जिन्ना, कंहिंखे चइजे ही इज़ दी मोहम्मद अली जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, द इस्तेमालु कईसीं छाजे करे जो हिन कॉमन माण्हुनि खे असां कॉमन प्रॉपर माण्हुनि खे कॉमन सां इस्तेमालु लॻियो, उन करे द था हणूं। कॾहिं कॾहिं वरी माना हीअं इस्तेमालु कंदा आहियूं, माना ॻाल्हि पियो कयां त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना असां द न हणंदासीं, पर कंपेयर कंदा द हणंदासीं, पर हिन जो टाइटल बि आहे कहिड़ो, कायदे आज़म टाइटल आहे, शहीद मिलत, कायदे मिलत, शहीद रानी, उन्हनि में असां द हणी सघूं था पिया, नालो आहे पर हुनजो टाइटल आहे। कश्मीर आर्टिकल न आहे लॻल, छो त शहर जो नालो आहे। कश्मीर इज़ द पेरिस, पेरिस बि त शहर जो नालो आहे, पर हिनखे कंपेयर कयो वियो आहे, हिनखे असां आम करे छॾियो आहे, कश्मीर इज़ द पेरिस ऑफ पाकिस्तान, इनजे करे असां हिते बि द जो इस्तेमालु न कयूं पिया। अचो हिते, अरुंधति रॉय, ग्रेटेस्ट राइटर नॉवेलिस्ट ऑफ इंडिया, इज़ दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर खे असां द हणी छॾियो। दिस बॉय इज़ दी शेक्सपियर, बॉय जी क्वालिटी अहिड़ी आहे जो शेक्सपियर वारी जेका हुन में विट आहे या विज़डम आहे, इन करे त शेक्सपियर हुनखे था पुटियूं पिया। श्रीनगर इज़ दी वेनिस ऑफ इंडिया, शहर जे नाले खे द जा। असलम इज़ दी इक़बाल ऑफ सिंध, द इक़बाल करे छॾियो आहे, जॾहिं असां जुमिले में ईअं लिखंदासीं, इंडिविजुअल लिखियल हुजे असां नथा हणी सघूं हुनजे मुताबिक़। बॉम्बे इज़ दी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, दी मैनचेस्टर, दी विनाइस। असलम इज़ गोरख हिल इज़ दी मरी ऑफ, द मरी ऑफ सिंध प्रोविंस। अहिड़े तरीक़े सां he is the Newton of our class. Kalidas was the Shakespeare of Sanskrit. So they can be compared, as some examples are even written in high school English grammar by Renan Martin. उनमें भी तव्हांखे काफ़ी कहिड़े क़िस्म जा जुमिला इहे मिलंदा। So असांजी ॿिए ॾींहं जी टॉपिक हूंदी, उनमें adjective that is very much important, especially for entry test. We will discuss and we will be more concentrative to this topic in order to understand every matter, everything properly, so that we may not have any doubt about this topic. Thank you very much.